Om Shri Ganeshaya Namo Namah. Greetings to everyone world over, all our brothers and sisters across the globe, wherever you are. It's a green morning, green afternoon, green evening. We all are together today for a very special program because one of the most important skill which is needed on this planet, if you want to be successful in any arena, any area, anywhere across the globe, the most important skill is communication skill. And when you communicate, when we say communication, तो घर में भी होता है, आपस में बातचीत होती है, माता पिता से बातचीत होती है, भाई बहनों से बातचीत होती है, परिवार के और सदस्यों से भी बातचीत होती है, आप स्कूल पहुंचते हैं वहां भी कम्युनिकेट करते हैं, आप कॉलेज में हैं वहां भी कम्युनिकेट करते हैं, आप किसी वर्क प्लेस में हैं वहां भी कम्युनिकेट करते हैं. इन सब चीजों को जब हम लेकर चलते हैं तो कम्युनिकेशन तो हो रहा है, संवाद तो हो रहा है, बातचीत तो हो रही है, पर क्या वो इम्पैक्टफुल है? क्या वो रेलेवेंट है? क्या वो नीडफुल है? क्या वो डिजायरेबल है? So the most important thing in communication is connecting. Connecting to the people with whom you are interacting. इसीलिए जितने भी अच्छे वक्ता हैं, जो लोग प्रोफेशनल स्पीकर्स हैं, जब वो किसी जगह पर बोलने के लिए जाते हैं, बातचीत करने के लिए जाते हैं, you know what do they do first? वो 15-20 मिनट, आधा घंटा प्रोग्राम से पहले पहुंचते हैं. क्यों पहुंचते हैं? वो वहां जाकर सबसे पहले ऑडिटोरियम को, हॉल को, सिटिंग प्लान को, मेन डायस से ऑडियंस कितनी दूर है, माइक कैसे हैं, उनकी टेस्टिंग करना, पोडियम, बाकी सब चीजों की आपके ऑडियो विजुअल का डिस्प्ले, इन सब चीजों को आप देखते हैं. बिकॉज यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट. आर यू गोइंग टू ओनली कम्युनिकेट? Or are you going to connect with the people those are going to listen to you in that particular auditorium and hall in a little while? और मजा तो तब है जब आप बोलना शुरू करें. The moment you open your mouth, you tell the whole world who you are. And your talk should be, your interaction, your communication to connecting should be so effective that people should come to the edge of their seats and they say, wow, this is what we were looking forward to. So, ladies and gentlemen, today's topic is something very, very important. And if you grasp a portion of it in a real manner and bring it to your life, you can do wonders on this particular planet. सबसे पहले अपनी ये इनहिबिशन को छोड़ दीजिए. उन चीजों को छोड़ दीजिए. मुझसे ये हो नहीं सकता, मैं ये कर नहीं सकता, मैं ये कर नहीं पाऊंगी, ये कैसे होगा, ये किस तरीके से है. Start thinking positive. Start bringing that confidence in you. Yes, confidence will bring, and confidence will come with preparation. And preparation is practice, practice, practice. When we come to this world, we do not know any language for that matter. How do we acquire that? How do we get that? Let's get to today's topic, all of us together, and let me share something very interesting. Ladies and gentlemen, we are communicating and we are connecting. Some of us, we are connecting, but everybody is communicating. अगर आपकी बात, आपके विचार, आपका बात का सलीका, आपका कहने का तरीका दूसरे को समझ नहीं आता, तो ऐसी अंग्रेजी बोलने का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने का, which goes above the board, is of no use. The language is a vehicle on which you sit and you mount and you communicate and connect with others. When you connect with others, you connect heart to heart, you connect soul to soul, you connect mind to mind. Connecting is very important when you're communicating.
अब देखिए, ये सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मैंने आज का जो विषय मेन लिया है वो टूरिस्ट को लेकर, टूरिस्ट गाइड्स को लेकर। जब भी कोई पर्यटक, जब भी कोई टूरिस्ट किसी कंट्री को विजिट करता है, it's something amazing. This study needs a lot of research, a lot of depth, a lot of homework, and we are going to do, our chamber is going to do on that. कि जो टूरिस्ट गाइड्स हैं, जब वो टूरिस्ट के साथ बातचीत करते हैं, उनके एटिकेट्स, उनके मैनर्स, उनके जेस्चर्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी कम्युनिकेशन स्किल, उनकी सब्जेक्ट की पकड़, किसी मॉन्यूमेंट को आप दिखा रहे हैं और उस मॉन्यूमेंट के बारे में आप एक्सप्लेन कैसे करते हैं, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, अगर देखा जाए तो पूरी विजिट के अंदर, टूरिज्म सेक्टर के अंदर, tourist guides, they spend maximum time with the visiting tourist. If that is so, तो टूरिस्ट यहां से सेटिस्फाइड जाएगा या डिससेटिस्फाइड जाएगा? टूरिज्म में क्या उस टूरिस्ट का रिपीट विजिट होगा, रिपीट टूरिज्म होगा? और क्या वो टूरिस्ट कुछ और लोगों को भी जाकर कहेगा भारत देख के आओ, एक बार भारत विजिट करके आओ? कल्चर तो है ही, आर्ट तो है, कुजीन भी है, डांसेस भी है, म्यूजिक भी है, वंडरफुल पीपल आर आल्सो देयर। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टूरिस्ट गाइड्स, द वे दे एक्सप्लेन टू यू, द वे दे कम्युनिकेट विद यू, द वे दे केयर फॉर यू is remarkable. That's what every tourist should get the impact. अगर हर टूरिस्ट यहां से सेटिस्फाइड जाएगा, so they will send 10 more tourists, 20 more tourists, 30 more tourists. And when you get repeat tourism, when you get high spending tourists coming over here, we don't need mass tourism. We need selective tourism. We need high spending tourism, and we need repeat tourism so that people should be happy. आज एक जगह गए, कल दूसरी जगह जाए। भारत इतना विशाल है, there are so many places to be seen right over here. तो आज एक बात को समझ लीजिए कि if we want to grow tourism in our country, it is only and only factor how tourist guides are taking care of those tourists. हम एक पैनल डिस्कशन भी लाएंगे आपके लिए, जिसमें एसोसिएशंस के कुछ मेंबर्स आएंगे, कुछ स्पेनिश गाइड होंगे, कुछ फ्रेंच गाइड होंगे, कुछ और भाषाओं के गाइड्स होंगे, कुछ हिंदी के होंगे, कुछ अंग्रेजी के होंगे। इट डिपेंड्स ऑन, क्योंकि हर तरह के टूरिस्ट आते हैं, तो हम उनकी भाषा में किस तरह से उन्हें कंफर्टेबल करते हैं, किस तरह से उन्हें महसूस करवाते हैं। होम अवे फ्रॉम होम, enjoy when you're visiting India. I'm telling you, they will spend more money. They'll give you a wonderful tip also. They will go satisfied tourists from here, and they will send many more people in future. It's amazing, amazing. पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं पिछले अपने 40 साल का पूरी जर्नी को देखता हूं, तो अल्टीमेटली मेरे दिमाग में भी यही आता है, आप पॉलिसी कीजिए, प्लानिंग कीजिए, मार्केटिंग कीजिए, स्ट्रेटेजी कीजिए, कैंपेन कीजिए, सोशल मीडिया कीजिए, अब्रॉड जाइए, इंडिया में कीजिए, जो मर्जी कर लीजिए। आप आईटीएम में जाइए, आप वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में जाइए, आप पाटा में जाइए, आप आस्था में जाइए, आप किसी भी फोरम पर जाइए, बट अल्टीमेटली इज गोइंग टू बी द टूरिस्ट गाइड. It's better to focus on that. And at the same time, we also learned from the Ministry of Tourism officials that now there is also a concept of tourist facilitators. That means the boys and girls, those are in schools, those are still studying, learn and earn and learn. A lot of things are there. We will talk about that as well separately, what you can do. जिस भी सिटी से आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, सोचना शुरू कीजिए, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट
और देखिए, टूरिज्म फैसिलिटेटर बन जाइए, टूरिस्ट गाइड बन जाइए। और ये भी मुझे पता लगा कि जो टूरिस्ट गाइड को अभी लाइसेंस मिलता है, दैट इज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अलोंग विद जब आप मॉन्यूमेंट्स पर जाते हैं तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑल्सो स्टैम्प्स दैट पर्टिकुलर द कार्ड विच इज गिवन टू आवर टूरिस्ट गाइड्स। तो उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए आगे चलते हैं। तो आज के टॉपिक में मैं 3 चीजों पर फोकस करूंगा। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन टू कनेक्टिंग, मैं एजुकेशन पर फोकस करूंगा, टूरिज्म पर फोकस करूंगा और आपकी हेल्थ और वेलनेस पर फोकस करूंगा। दीज आर द 3 एरियाज। डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल पीपल, they also have to communicate very well and they have to get connected with the patient. They have to understand how the patient is responding to the medicine and to the treatment which is being given. And at the same time, in school, colleges, universities, ITI, polytechnic, skill centers, we got to understand how children are perceiving that particular communication to connecting idea. That is something very important. So, ladies and gentlemen, hearty welcome on behalf of ICSI, इंटरनेशनल चेंबर फॉर सर्विस इंडस्ट्री। जैसा मैंने आपको कहा कि आज हम 3 एरियाज पर फोकस करेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी बेसिकली एजुकेशन, टूरिज्म एंड योर हेल्थ एंड वेलनेस। तीनों एरिया हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम तीनों को साथ लेकर चलेंगे और आपके साथ बातचीत करेंगे। अब कम्युनिकेशन टू कनेक्टिंग कैसे होता है, हमको कैसे पता चलता है कि कम्युनिकेशन टू कनेक्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगले इंसान की जिसके साथ हम बातचीत कर रहे हैं, उनकी हैप्पीनेस देखकर, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर, उनकी आईज में झांक कर हमें महसूस हो जाएगा कि उनको हमारी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, वो हमारे साथ कनेक्टेड है कि नहीं है। सो कम्युनिकेशन टू कनेक्टिंग की जब हम बातचीत करें तो आपके पास एम्पैथी भी होनी चाहिए। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपैथी नहीं चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन फॉर कनेक्शन। इसके 5 स्टेप्स हैं जिसकी हम बातचीत करते हैं एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन की। यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू लिसन, you have to respond, you have to connect, and you have to understand. That is something very, very important. Now, empathetic communication के अंदर how you improve your ability to, first of all, communicate your needs clearly, listen with empathy to other people's needs, and number 3, third part, again very important, and deepen, listen with empathy to other people's needs, and deepen all your relationship. जितना अच्छा आप रिलेशन कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो पेशेंट्स जिनको सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, जिनको डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं डे टाइम के अंदर, और फिर उनको अपना ऑपरेट करने के बाद जब वार्ड में चेंज करते हैं, तो जिस डॉक्टर ने ऑपरेट किया होता है वो शाम को वार्ड में चक्कर लगाता है और सारे पेशेंट से पूछता है, अब आपको कैसा लग रहा है? आई होप यू आर फीलिंग बेटर। आपको अब वो पेन तो नहीं हो रही, आपको वो दर्द तो नहीं हो रही। नाउ व्हाट इज दैट? इट्स अ कम्युनिकेशन टू कनेक्टिंग, इज कनेक्टिंग विद दैट पेशेंट। सिमिलर वे, अगर टीचर हर बच्चे के साथ कनेक्ट होता है और टूरिज्म में हर टूरिस्ट गाइड आने वाले टूरिस्ट के साथ कनेक्टेड होता है, the scenario of the country would be altogether different. हम जब 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं, आप 10 ट्रिलियन में भी जा सकते हैं। अब आप देखिए, कोई बच्चा अपने मम्मा पापा के कंधे पर लगकर चुप हो जाता है, सो जाता है, सूदिंग महसूस करता है, हैप्पी महसूस करता है, कंफर्ट महसूस करता है, सिक्योर्ड महसूस करता है। So what exactly is that? Humans are wired for connection. You have to understand that that is something very important, that the human beings, they are wired for connection. We all have to understand. ये देखिए, अगर मम्मा अपने बच्चे से बात कर रही है तो कम्युनिकेट कर रही है या कनेक्ट कर रही है? Communication with connection means
We as adults, हम जो बड़े हैं उम्र में, change our perspective of children's behavior and our expectations for their development. We must step past the role of being a caregiver and instead of work to connect with our child as a person, step away from the language goals for a minute and focus on the connection and connectivity. Through connection, communication will automatically come. बच्चे के साथ मम्मा बात भी नहीं करती है, उसकी आंखों में देखती है और बच्चे को लगता है because communication with connection is craving more connection with your child, struggling to use positive discipline. ये में questions हैं. Want to create harmony at home. So ladies and gentlemen, are we looking forward to connecting or are we looking forward to communicating? मैं नतमस्तक हूं अपने mentor को. I respect him a lot. I adore him a lot. And he is a wonderful, wonderful person on this planet. If you watch his videos, you would be amazed. When I get up in the morning, first 20 minutes, I worship him and I listen to him. I start my day with him. And he is remarkable. He's out of this world. He's altogether a different person from a different planet with a different thought process, with different positivity. बहुत कुछ मैं इनसे सीखता हूं. And he says, your ability to communicate is an important tool in your pursuit of your goals, whether it is with your family, your co-workers, your clients, or your customers. You got to understand, communicate in such a way. Here's another gentleman who landed all the way with $5 in America. And today, one of the most respectable person in United States. He had been the chancellor of the university. And when you talk about communication skills, connecting skills, neither are Cuban. I'm one of the most respectable person. He's my another mentor. The organization that can't communicate can't change. And the corporation that can't change is dead. You have to understand because communication to connecting is very important. One of his books, you must, listen to his book in the audio form on YouTube, How to Be a Great Communicator. If you believe you can and believe it strongly enough, you will be amazed at what you can do. The complete system for communicating effectively in business as well as in life, wonderful, inspiring, and a joy to read. And that is How to Be a Great Communicator. You would just love it. Here's another gentleman. And when you will listen to John Maxwell, oh my God, he is another remarkable person who has contributed so much to humanity. And when I listen to him, when I go through his audio portion, which is very strong, it's more than 4 hours, and that is communication to connecting. He says there are 4 H's of connecting. The first thing is humor. You got to be laughing. Humor is a lubricant. Humor removes friction. जैसे मशीन के 2 पार्ट के बीच में अगर आप तेल नहीं डालेंगे तो वो चू 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 करेंगे और उनकी आवाज आएगी, और अगर आप तेल डाल देंगे तो वो मशीन परसों तक अच्छी चलेगी क्योंकि आपने उसका लुब्रिकेशन कर दिया. वैसे ही लेडीज एंड जेंटलमैन, humor is the lubricant as far as communication to connecting is concerned. Number 2, talk from your heart. Captivate emotions. जब आप दिल से बात करते हैं ना तो आवाज दूर तक जाती है और दिल तक पहुंचती है, और दिल से दिल को मिला दो तो सब कुछ हो जाता है. और हम तो दिल की बात करते हैं डिजिटल इंस्पिरेशनल लैब, इफ यू रिमेंबर एंड इफ यू रिकलेक्ट. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, hope. Inspire people. Give them hope. You can do it. You must do it. You will do it. You have to do it. इसके बगैर काम नहीं चलेगा. अरे करो ना, एक बार ट्राई तो करो.
And last, you must help others. Provide assistance. जो कुछ भी आपके इख्तियार में है, जो कुछ भी आपके बस में है, बस वो औरों को दे दीजिएगा best possible way so that they also live happily. And John Maxwell says right over here, everyone communicates, but few connect. Oh my God, what a powerful. Everyone communicates. हम सब बातचीत करते हैं, पूरा दिन बातचीत करते हैं, टेलीफोन पे बात करते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं, but there are very few who connect. जब आप किसी से बातचीत करते हैं, आपकी पिच कैसी है, आपका बास कैसा है, आपकी साउंड कैसी है, आपकी एनर्जी कैसी है, आपकी शिद्दत अंदर से कैसी है, क्या आप बात करना चाह रहे हैं या आप कह रहे हैं लेट्स फिनिश द कन्वर्सेशन, लेट्स फिनिश द कन्वर्सेशन. You can make out from the pitch, from the bass, from the bass, everything. Now, there are 5 practices that anyone can do to connect with others. Number 1, find common ground. ये मत सोचिए कि आपने क्या कहना है, पहले ये देखिए आपके ऑडियंस कौन है, कौन लोग हैं जो दूसरी तरफ बैठे हैं, उनके लेवल पर आकर बात कीजिए. अगर आप 6 स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं तो उनके लेवल पर आइए. अगर आप 12 स्टैंडर्ड के बच्चों से बातचीत कर रहे हैं तो उनके स्टैंडर्ड पर आइए. अगर आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, देन कम टू देयर लेवल एंड मेक योर कम्युनिकेशन सिंपल. बहुत हाई फंडा वर्ड्स मत यूज कीजिए where the people have to refer to dictionary. There are a lot of interesting stories I'll discuss some other day with you. Create an experience which everyone enjoys. Capture the people interest. जो आपके ऑडियंस हैं, उन्हें समझिए, उन्हें जानिए, उनका क्या इंटरेस्ट है, उन्हें क्या चाहिए. Inspire people. And finally, be authentic. Live what you communicate. ये ना हो कि कह तो आप कुछ और रहे हैं और कर आप कुछ और रहे हैं. और आज के जमाने में, ladies and gentlemen, when you talk about communicating, connecting, sharing, forwarding, social media marketing, whatever you talk about today, you got to understand, just make the best of every tool, whatever you can, so that you make optimum use of artificial intelligence in the digital world the best possible way. जब हम कम्युनिकेशन की बातचीत कर रहे हैं तो आइए स्वामी विवेकानंद जी से शुरू करते हैं और मैं आपको लेकर चलता हूं उस दुनिया में जहां पर 1893 के अंदर शिकागो की कॉन्फ्रेंस में यूएसए के अंदर स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा. What did he say? Let's listen to him. It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. Thank you in the name of the most ancient order of Mount Sinai. Thank you in the name of the Mother of Prudence. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and faiths. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the audience, have told you that these men from foreign nations may well claim the honor, bearing to different lands. I just wanted to give you the glimpses so that you understand what exactly, can you believe it? What must have been the communication of Swami Vivekanand ji? What he must have conveyed in 1893? That people got up and there was applaud and everybody standing from there. They said, who is this gentleman? Who is this person? Who is the one who is communicating with us? Because he got connected. Communication to connection, that is communication to getting connected, is very important, which we all have to understand, ladies and gentlemen.
That is something amazing which you all must realize. चलिए हम स्वामी विवेकानंद जी से, अपने भारत से आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे प्रेसिडेंट के पास जो हॉलीवुड में भी रहे, प्रेसिडेंट भी बने, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ गैप. यूट्यूब के अंदर देयर इज अ कंपाइलेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन्स humor from selected speeches 1981 to 89. 1 मिनट के लिए सुनिए और बाकी अपने आप यूट्यूब पर देखिए. What a gentleman. What a gentleman. Oh my God. Look A at question to President Rick. Mr. President, I want to raise an issue that I think has been lurking out there for 2 or 3 weeks and cast it specifically in national security terms. You already are the oldest president in history, and some of your staff say you were tired after your most recent encounter with Mr. Mondale. I recall yet that President Kennedy had to go for days on end with very little sleep during the Cuba Missile Crisis. Is there any doubt in your mind that you would be able to function in such circumstances? Not at all, Mr. Truitt, and I want you to know that also. I just wanted so that you just get an idea. When you get a time, please go on the YouTube, see it for yourself, Ronald Reagan speeches. You will get an idea. You will come to know what exactly the president must have conveyed and what all must have been there at that point of time. You would just love it. You would just enjoy it like I enjoyed his presentation so well. He spoke so good. You just can't imagine. You just can't imagine. And it's a wonderful to listen to him and see the compilation of the President Ronald Reagan humor for selected speeches right from 1981 to 89. You would just love it. You would just love it. So ladies and gentlemen, basically, I just want to tell you is now Obama, when he came to India, listen to his speeches as well. And his wife, Michelle, when she had gone to school, how she was connecting with the small kiddies in India. She visited number of schools, interacted with the teachers, with the students, with the children at different places. What I want to share with you is, जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल, आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाइए, आपने देखा है कि अच्छे पॉलिटिशियंस जो हैं वो पहले लॉयर रहे हैं, क्योंकि जो लॉयर्स होते हैं जो कोर्ट में बोलते हैं, मिलॉर्ड ये केस ऐसा है, माय लॉर्ड ये केस ऐसा है, माय लॉर्ड मैं इस सेक्शन के अंतर्गत आपको ये बताना चाहता हूं, माय लॉर्ड दिस केस नीड्स दिस 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 दिस. और जो जज है उनकी नॉलेज, उनकी कन्विक्शन, उनका आर्गुमेंट और उनकी प्रिपरेशन उस केस की जो होती है, उसी के बेस के ऊपर व्हाई डू पीपल से कि जो लॉयर है they can make and break your case. And that's why look at the Supreme Court lawyers, look at the High Court lawyers, look at the other lawyers, those are coming into this particular profession. Anybody who wants to be a teacher, anyone who wants to be a counselor, anybody who wants to be in the front office of any business, anybody in tourism who wants to communicate directly with the tourist, and for that matter, any profession on this planet, ladies and gentlemen, the most important skill which we have got in this universe is communication to connecting skills. आज के इस प्रोग्राम के बाद I would request each one of you, कम से कम 10 से 15 मिनट रोज, if you want to be a good communicator and good connector, communication to connector, तो मेरी एक रिक्वेस्ट मानिएगा, the practice which you can do every day, listen for about 15 minutes something good in the language in which you want to excel. It can be any language. हिंदी है, इंग्लिश है, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है, तेलुगु है, for that matter any language you want to be. अब आप देखिए, मान लीजिए
किसी स्टेट की कोई डांस परफॉर्मेंस है, किसी भी स्टेट की, we pray to Almighty that everything should be peaceful in Manipur. अब मणिपुर का डांस कितना फेमस है, वर्ल्ड ओवर पीपल नो। जब आप बेस्ट डांसेस की बातचीत करते हैं तो मणिपुर डांस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन डांस में तो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन द पर्सन हु इज एक्सप्लेनिंग अबाउट द डांस, हु इज एक्सप्लेनिंग अबाउट द कॉस्ट्यूम ऑफ द डांसर, the person who is giving explanation what this dance form is, what does this depict, how and why this is performed this way, that person is more important than anybody else. आप इतने सारे प्रोग्राम देखते हैं सोनी टीवी के ऊपर, अब कपिल शर्मा शो के अंदर इतनी सारी सेलिब्रिटीज आते हैं। Why Kapil Sharma only excels? Because communication to connecting. Okay. आप इंडियन आइडल देख रहे हैं आजकल, आपने डांस कंपटीशन भी देखा, उसमें एक एंकर आता है, आपने सिंगिंग कंपटीशन देखा, उसमें भी एक एंकर आता है। वो जो सूत्रधार है, वो जो एंकर है, वो उस प्रोग्राम की माला को उस धागे के अंदर पिरोता है। कम्युनिकेशन टू कनेक्टिंग is the most important skill which you all have to realize. I would request each one of you, and please understand, in a day, what I learned from my mentor, एक दिन के अंदर 60 to 70,000 thoughts आपके दिमाग से गुजरती हैं, and approximately 13,000 words you hear, you grasp, you listen, your eardrums get each day. Imagine how much you are listening, how attentive you are listening, how carefully you are listening, because listening itself is also a communication. किसी को आप कनेक्ट तो तब होगे ना जब ये समझ पाओगे कि मेरे सामने वाला कौन है, मेरे सामने के ऑडियंस कौन है। जो लोग मेरे साथ YouTube पर जुड़े हैं, यहां पर हैं, मुझे समझना पड़ेगा, मुझे उन सबको इंस्पायर करना होगा, मुझे उन सबके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, उनके दिल के साथ, उनके दिल की धड़कन के साथ, उनकी भावनाओं के साथ, उनकी एक्सपेक्टेशन के साथ, उनकी इंस्पिरेशन के साथ, और उसके साथ साथ एस्पिरेशन पर भी काम करना होगा। Each day, ladies and gentlemen, we have got a very limited time on this particular planet, क्योंकि आज तक परमानेंटली यहाँ कोई नहीं रहा। मैंने पता किया है, मैंने बहुत सारे फोन घुमाए, मैंने सब जगह से पता किया है, nobody has stayed over here permanently। और एक बात और भी समझ आई, यहां से कुछ भी साथ नहीं जाएगा। Everything is going to be here. So what kind of a legacy you want to leave behind? You want to put a new trail, or you want to walk on the path which others have laid for us? Ladies and gentlemen, each day, add something new to your skill, to your competency, your talent, your passion, and जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, पर कुछ करिए, कुछ करिए। वो गाना बड़ा अच्छा है, कुछ करिए कुछ करिए, याद है ना आपको? शाहरुख खान की कितनी अच्छी मूवी थी वो, और वो गाना कितना अच्छा था, कुछ करिए कुछ करिए। So similar way, I would like to request all of you that every day we will bring something to you which is very important, because you matter. Your coming on this planet matter. प्रभु ने, भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने, जीसस ने, जिसको भी आप मानते हैं, उसने आपको किसी खास चीज के लिए यहां पर भेजा है। आप अपने टैलेंट को पहचानिए और रोज अपने आप को इंप्रूव कीजिए, रोजाना इंप्रूव कीजिए। When I communicate with all of you for 34 minutes today also, because we started at 8 o'clock, I learn, I relearn, I upskill myself, I add so much. ये जो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करते हैं, can you imagine how much depth and how much time it goes into? Because you have to see the chronology, you have to see the sequence, you have to see the flow, you have to see your thought process,
And that keeps you, because ultimately your contribution to the world should be, how can you make this world a better place? जैसी दुनिया आपने पाई, आओ उससे बेहतर इसे बनाएं और उससे बेहतर इसे छोड़कर जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, उन सभी का बहुत बहुत आभार है। जुड़ते रहिए, आते रहिए, मिलते रहिए, शेयर करते रहिए। कुछ नया लेकर आते रहेंगे, कुछ न कुछ नया आपके साथ रोज हम लोग जोड़ते रहेंगे और एक दूसरे से सीखते रहेंगे। बिकॉज आवर थॉट प्रोसेस इज, वी आर co-learners. We are co-learners. कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। लेकिन जाने से पहले देयर इज अ ब्यूटीफुल ऑडियो बुक, उसे यूट्यूब पर देखिएगा, गुड टू ग्रेट, यू कैन एंजॉय। और निदो क्यूबन का मैंने आपको बताया, हाउ टू बी ग्रेट कम्युनिकेटर। प्लीज गो थ्रू दैट एज वेल, एंजॉय योरसेल्फ, एंड फ्रॉम टुडे बी वेरी केयरफुल, बी वेरी कॉन्शियस। जब आप किसी से भी बातचीत करें, मोबाइल पर करें, फोन पर करें, पर्सनली करें, आप कोशिश कीजिए कि आपकी आवाज इंपैक्टफुल होनी चाहिए, आपकी आवाज कनेक्टिंग होनी चाहिए। आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कीजिए कि दूसरे को क्या चाहिए, बिकॉज ही मैटर्स, शी मैटर्स, एंड यू मैटर। मिलेंगे कल रात को 8 बजे फिर एक ब्रेक के बाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, हैप्पी हैप्पी रहिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे और बेहतर